from examination Namaste, point of ma'am. view as well. Good afternoon, ma'am. Nikhil Garg, 49. Okay. My What name about is Nikhil Garg, MBBS batch 2024, roll number 49. My seminar topic is role of vitamin D in blood calcium regulation. विटामिन डी विटामिन डी फैट सोल्यूबल विटामिन है ये वर्क एज हार्मोन विटामिन डी आल्सो नोन एज कैल्सीफेरोल बिकॉज ऑफ इट्स रोल इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इट इज एंटी रेसिटिक फैक्टर बिकॉज ऑफ इट prevent rickets. The the next slide? precursor of That's the form. vitamin D is cholesterol in animals. In under the exposure of UV light, it convert to cholecalciferol. It also known as vitamin D3. In plants, the precursor of vitamin D2 is ergosterol. Next slide. Biosynthesis of action form of vitamin Next D. slide. This is not required. Next slide. We basically wanted what is how the regulation of calcium is happened through vitamin D. That point you just right. मैम Yes. कैल्सी कैल्सीट्रायोल कैल्शियम और फोस्फेट के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है इन इंटेस्टाइनल सेल कैल्सीट्रायोल इंटेस्टाइनल सेल में एंटर करता है और रिसेप्टर से ऐड होता है जिससे बनता है कैल्सीट्रायोल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फिर ये Correct. रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस में जाता है और ये काल बाइंडिंग जीन को प्रमोट करता है जिससे काल बाइंडिंग प्रोटीन इंक्रीज होता है जिससे कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इंक्रीज होगा और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा और वो प्लाज्मा में जाएगा और Right. वहाँ पे प्लाज्मा की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी इट एंटर्स द टारगेट सेल एंड बाइंड टू It's okay, beta. It's okay. Now explain on the diagram at the level of bone and at the level of kidneys what it does. yes ma'am the site of actions are intestinal villi cell bone osteoblast and kidney distal tubular cell Hmm. जब प्लाज्मा Now, कैल्शियम डिक्रीज होगा तो पीटीएच हार्मोन इंक्रीज होगा जिससे कैल्सीट्रायोल इंक्रीज होता है फिर कैल्सीट्रायोल इंटेस्टाइनल सेल पे और बोन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा जिससे प्लाज्मा कैल्शियम इंक्रीज होगा और कैल्सीट्रायोल रीनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है जिससे भी प्लाज्मा कैल्शियम इंक्रीज होगा as a hormone in the regulation of calcium and phosphorus metabolism and the maintains the normal plasma level of calcium and phosphorus by action on intestine, kidney and bone. Action of calcitriol on intestine. Calcitriol increase the intestinal absorption of calcium and phosphate in the intestinal cell. Calcitriol bind a cytosolic receptor to form a calcitriol receptor complex. This complex then approach the nucleus and interact with a specific DNA leading to the synthesis of specific calcium binding protein. ये calcium binding protein काल binding protein होता है. This protein already increase spoke this point. Why you do repeating it again and again? You explained me in the diagram. At the level of bone, you tell me what is his mode of action? yes ma'am action How of does vitamin D act on the bone so that concentration of calcium, how it deviates? yes ma'am action of calcitriol on the bone. Calcitriol promote the mineralization of bones. Calcitriol So stimulate osteoblast which secrete alkaline phosphate. Due to this enzyme, the local concentration of phosphate is increased. The ionic product of calcium and phosphorus increase, leading to mineralization. mineralization, and therefore the plasma calcium level is decreased. So Yes, ma'am. its effect is hypocalcemic through bones, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, at the level Action, of kidneys. action of calcitriol on kidney. Calcitriol is also involved in minimizing the excretion of calcium and phosphate throughout the kidney by decreasing their excretion and enhancing reabsorption. So thereby increased concentration of calcium in the plasma. That's all. Plasma. Yes, ma'am.